Hi everyone, once again welcome to RK Digital School. In this lecture, we are going to discuss what is encapsulations. Encapsulation is the concept of wrapping data and method together as a single unit. It restricts direct access to some of the object components like variables, which is a means of preventing accidental interference and misuse of data. Okay, let's सी विद द एग्जाम्पल मेनली इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम प्राइवेट वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और पब्लिक गेटर एंड सेटर मेथड डिफाइन करते हैं इनकैप्सुलेशन इम्प्लीमेंटेशन के लिए. ओके, लेट्स सी द एग्जाम्पल. So I'm creating one class as a person. Okay, now I'm creating a constructor. In it, this is a constructor, and now is the self keywords, the current class object. Okay, and then name and then age. Okay, self dot name equal to name. Okay, let's see the output now. इसका आउटपुट आ गया राकेश. तो इनकैप्सुलेशन में क्या होता है, यू कैन नॉट एक्सेस दिस वेरिएबल डायरेक्टली. ओके, इट विल रिस्ट्रिक्ट यू टू एक्सेस डायरेक्टली this variable. Okay, so I'm just creating the private variable we can use to create underscore same as a age. Now let's just run this program. It should give you the error, right? You cannot access directly, right? अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, प्राइवेट वेरिएबल कर दिया, तो ये क्या बोल रहा है कि ये आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते हो, राइट? इट्स देन हाउ वी कैन एक्सेस दिस वन, विल सी दैट एग्जांपल. करना पड़ेगा, इसका गेटर एंड सेटर मेथड क्रिएट करना पड़ेगा. तो लेट्स स्टार्ट विद द गेटर मेथड, राइट? डेफ get underscore name, and you can pass the self. Okay, and then return self dot your name. Okay, same as a for age के लिए def get underscore age. Okay, self return self dot underscore age. Okay, then create the setter method, right? Def set underscore name, and then just pass the self object. Okay, let's run this program and see the output. Still we are getting the error, right? Now how we can access this one? See, use to access the data using getter method. Okay, get underscore name. Okay, and print इसका आउटपुट आ गया, get underscore name, get age Rakesh and 34. Now we'll change the and let's see the output. Rakesh Kumar Pink. Okay, and output is 95. Okay, age is 95. Let's run this program and see the output. Okay, आ गया. So thanks for watching this video. We'll see you in the next lecture. Bye bye.